Good evening, everybody, and thank you very much for your time and joining in today. I am Alka Dhupkar from the Mumbai chapter of Network of Women in Media. Ahead of the Maharashtra Assembly elections, we have decided to brainstorm about certain issues, and this is the last session which we are conducting. This is going to be about rural Maharashtra and agriculture and allied industries. I'm not going to take much time and I'm going to straightforward introduce all the guests and panelists so that we can have much more time for the discussion. So today we have Deepa Kadam with us from Sakal Media Group. She is the senior correspondent and she has been a journalist for last more than 2 decades, if I am not wrong. Experienced journalist. Thank you, Deepa, for your time. Then we have Neeraj Hatekar, sir. Professor, School of Development, Azim Premji University, Bangalore. We have Seema Kulkarni with us. NWMI has known Seema Kulkarni for her insights. She's the Senior Fellow of SOPECOM Pune and National Team Member of Mahila Kisan Adhikar Manch, MAKAAM. Then we have Adinath Chavan. He's the editor of Agrowon, and very recently he has been honored with DLIT degree from DY Patil Agriculture and Technical University for all his contributions to the field. He has been in agriculture journalism for more than 35 years. So we are having a great discussion today, I'm sure about it. To start with, I will come to Deepa. Deepa, if you could tell us about your experiences traveling across rural Maharashtra in last few months. सो अगर हम बात करें तो एक जो बोलते हैं क्या आवाज है, क्या आप बता सकते हैं, जैसे ये गवर्नमेंट बोल रही है हमने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है, तो लोग खुश है क्या जो अभी गवर्नमेंट महायुति की थी उसके साथ? यू यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ दीपा, जस्ट या। अलका, थैंक यू, आपने मुझे इस डिस्कशन में शामिल किया है। आपने जो सवाल पूछा है उसके बारे में हम आखिर में आएंगे कि लोग खुश है क्या नहीं है। उसके बारे में तो अभी इलेक्शन ही, वोटिंग ही होने वाला है, तो हमें पता ही चलेगा कि लोग खुश है कि नहीं है। लेकिन हमने पिछले 5-6 महीने में जब इलेक्शन के लोकसभा पार्लियामेंट के इलेक्शन के टाइम में हमने जो ग्राउंड पे हमने थोड़े से दौरे वगैरह किए थे, उस तरह का एक्सपीरियंस क्या है, ग्राउंड पे स्थिति क्या है, इसके बारे में आप मेरा कुछ जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। ग्रामीण महाराष्ट्र में रोजगार की समस्या बहुत ही गंभीर तरीके से है। जहाँ पे मैंने कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के दौरा किया था पार्लियामेंट्री इलेक्शन के टाइम में। तो वो जैसे मुंबई पुणे में रोजगार की समस्या गंभीर है, वैसे उससे भी बहुत ज्यादा रूरल एरिया में रोजगार की समस्या है। जैसे कि हम एक्सपीरियंस पे लेंगे तो पूरे कोकण बेल्ट में मैंने दौरा किया था। वैसे तो कोकण में 25 साल में एनरॉन प्रोजेक्ट आया था, 25 साल पहले। उसके बाद में जैतापुर, नानार और हाल ही में बारसू रिफाइनरी ऐसे प्रोजेक्ट आए थे। वेस्टर्न घाट में बसा हुआ कोकण प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर भूमि है। यह मुख्य रूप से आम, काजू और मछली की इंडस्ट्री बढ़ी है। यहाँ के लोगों द्वारा ग्रीन जोन इंडस्ट्री की मांग होती रही है, लेकिन कोई भी सरकार ने ग्रीन जोन इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा अमल नहीं किया है। कोकण की प्रकृति के प्रभावित होने वाले ही उद्योग लाए गए हैं, इसलिए स्थानिक लोग ऐसे प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े होते हैं। अलका, आप भी कोकण में से हो, आपको पता होगा कि किस तरीके से इन सारे प्रोजेक्ट को, एनरॉन जैसे प्रोजेक्ट को किस तरीके से विरोध हुआ है ग्राउंड पे, और लोग बहुत बड़ी तरीके से इस तरीके के जो प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान करने वाले प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन ग्रीन जोन इंडस्ट्री के समर्थन में यहाँ के लोग सामने भी आ जाते हैं। मैंने आपको कोकण के सिंधुदुर्ग जिले के अडारी का एक एक्सपीरियंस में बताऊंगी। सावंतवाड़ी से 20 किलोमीटर दूर एक अडारी नाम का गांव है। 10 साल पहले अडारी के गांव वालों ने इकट्ठा होकर एमआईडीसी के लिए यहाँ की जमीन देने का निर्णय लिया। गांव वालों ने एकजुट आके 720 एकड़ जमीन एमआईडीसी के लिए दी है। ये एमआईडीसी ग्रीन जोन में बनने वाली थी, इसलिए गांव वालों ने खुशी खुशी जमीन दी। इस एमआईडीसी में 350 उद्योग आने वाले थे।
और वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योग नहीं थे, इसलिए गांव वाले खुश थे। हकीकत यह है कि एमआईडीसी अभी तक शुरू हुई नहीं है। 10 साल से वो जमीन जैसे के वैसे पड़ी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री लघु उद्यम एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री नारायण राणे सिंधुदुर्ग से आते हैं। राज्य राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत पड़ोसी रत्नागिरी से आते हैं। तब भी एमआईडीसी शुरू हुई नहीं है। अब वहां के युवा क्या करें? दक्षिण कोकण से गोवा की बॉर्डर 60 से 70 किलोमीटर दूर है। गोवा में सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। साउथ कोकण से रोज हजारों युवक युवतियां नियमित रूप से बाइक पर सवार होकर पणजी जाते हैं, और हर चौथे दिन इस हाईवे पर बड़ी संख्या में एक्सीडेंट हो जाता है। 15 से 20 हजार के रोजगार के लिए मुंबई की जगह लोग पणजी को चुना जाता है। लेकिन अगर यह रोजगार लोकल स्थानीय रूप पर लोकल एरिया में दिया जाता है तो ये इस तरीके के हादसे हो होंगे नहीं। एक बात मैं जरूर करना चाहूंगी कि कोकण इंडस्ट्री में नहीं है, इंडस्ट्री कोकण में नहीं आ रही है, लोगों के हाथ के लिए रोजगार नहीं है, तब भी सत्ता में बैठे लोगों ने हाथ में सत्ता किसकी दी है? नारायण राणे के खिलाफ रोष था ग्राउंड पे, लेकिन उसी वही चुन के आए हैं बाद में। तो ये सवाल है कि लोग जब वोट करते हैं, जमीन के जो सवाल होते हैं और लोग वोट करते हैं, इनमें कौन सी चीज लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है? इसके बारे में मुझे हातेकर सर से ज्यादा सुनने के लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि जमीन के जो सवाल होते हैं वो वोटिंग करते समय लोग उनको देखते हैं या नहीं देखते। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पुणे बेस छोड़कर महाराष्ट्र के शेष 33 जिलों में कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। इन जिलों में 60 से 80 रोजगार इच्छुक लेबर है। हालांकि राज्य की जीडीपी में कृषि का हिस्सा केवल 12.7% ही है। महाराष्ट्र में युवाओं की शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकारी नौकरी पाने और अपना जीवन स्थापित करने के लिए यह युवा एमपीएससी यूपीएससी की पढ़ाई के लिए शहरों में आते हैं। पुणे इसका बड़ा हब माना जाता है, और राज्य के ग्रामीण भाग की ही नहीं है, शहर के भी बहुत सारे लड़के एमपीएससी के लिए तैयारी करते हैं। गांव में उनके माता पिता खेती से मिलने वाले पैसों में अपने बच्चों के लिए पुणे में पैसे भेजते हैं, और अपने भी 20 30 35 35 साल के बच्चों का ट्यूशन फी के लिए पैसे देते हैं, उनका पेट भरते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी से सारे सवाल मिटेंगे ऐसे उनके फैमिली को लगता है। जबकि हाल ही के वर्षों में सरकारी भर्तियां दिन प्रतिदिन कम हो रही है। महाराष्ट्र में पेपर लीक होना, स्पर्धा परीक्षा रद्द होना आम बात हो गई है। यह एक दुष्ट चक्र है जिसमें महाराष्ट्र का युवा फंस गया है। महाराष्ट्र के इलेक्शन में मराठा आरक्षण का मुद्दा भी बैकग्राउंड में दिख रहा है, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में बहुत ही गंभीर तरीके से सभी पार्टियों को जिन्होंने नुकसान किया था। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 48 में से 26 मराठा सांसद चुने गए हैं। इस दौरान मराठा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे का इंटरव्यू मैंने किया था। उनका कहना था कि 10-50 एकड़ जमीन के मालिक मराठाओं में कोई भी हाथ में कुछ भी लगता नहीं है खेती करके, क्योंकि आधा पैसा तो बीज खाद लेबर को ही चला जाता है। कुछ फसल अच्छी आती है तो फिर बारिश लेकर चली जाती है, बारिश से कुछ बचेगा तो फसल को बाजार में ठीक से दाम नहीं मिलता है। लेकिन अन्य रिजर्वेशन के जो लड़के होते हैं उन्हें सरकारी नौकरियां मिल जाती है, लेकिन मराठा युवा हाशिए पर रह जाता है। यह विचार जरांगे पाटिल ऐसे बोल रहे थे। डेटा के मुताबिक देखे तो महाराष्ट्र में मराठा वर्ग ओबीसी से भी बड़ा है। वो पूरी तरह खेती पर निर्भर है। प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का विषय हमेशा चर्चा में रहता है। लेटेस्ट महाराष्ट्र ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट जो किसानों आई थी, उसमें किसानों की आत्महत्या के ऊपर एक चैप्टर है। उसमें कास्ट के बेसिस पे कास्ट के ऊपर कौन सी कास्ट के ज्यादा सुसाइड फार्मर्स के हैं उस पे वर्गीकरण किया है। इनमें सबसे ज्यादा आत्महत्या मराठवाड़ा में मराठा और विदर्भ में कुणबी जाति के किसानों ने की है। बेशक यह सिर्फ एक आर्थिक और सामाजिक मुद्दा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में मराठों के हाथों में राजनीतिक सत्ता का खिसकना और गांव में ओबीसी का बड़ा होना मराठी राजनीति के लिए झटका है।
इसलिए सामाजिक और आर्थिक आरक्षण की बजाय ओबीसी में आरक्षण की मांग हो रही है। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव की तरह यही विधानसभा चुनाव भी मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ मतदार संघों में मराठा आंदोलन का परिणाम दिखेगा। वैसे भी महाराष्ट्र में 100 से 115 मतदार संघ ऐसे हैं जहां से मराठा कैंडिडेट ही चुन के आते हैं। जिस क्षेत्र में शुगर फैक्ट्री, मिल्क फेडरेशन जिसके हाथ में है, उस जगह लोग ऐसी पॉलिटिशियन पर निर्भर निर्भर रहते हैं। देहातों में घूमने के बाद पता चलता है कि खेती अब बिल्कुल लाभदायक नहीं रही है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, रूरल एरिया से शहरों में जबरदस्त माइग्रेशन हो रहा है। ये एक क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? मुझे लगता है हातेकर सर और आदिनाथ सर इसके ऊपर ज्यादा बात कर पाएंगे। अलका, आई एम Yes. Yes, thank you, Deepa, for that broader perspective, how to look at rural Maharashtra and agriculture both. Hatekar sir, I will of course come to you. For everybody's information, Hatekar sir's latest booklet or book, whatever he wants to call it, is about unemployment, right? And taking note on that, if you could tell us about, so 15th Finance Commission money funding is coming to Gram Panchayat. The income of farmers are going to be doubled in few years. That was the promise given to farmers. Then all the welfare schemes are promised to rural students, backward classes, and everything. So why we are stuck with this condition was what Deepa has just now elaborated. Yeah, thank you, Alka, and thank you, Deepa, for a detailed discussion on what Maharashtra is. I'll start with a number. Recently, the data on National Sample Survey consumption expenditure data came out last year, 22-23. Right? And our estimates of poverty are based on that data. So there is a very, Professor Surjit Bhalla wrote a paper in the beginning of this year in the Economic and Political Weekly, where he argued that our old poverty line is now outdated, that is too low. We now think of ourselves as a lower middle income country, which India is. And so we should use a poverty line appropriate for lower middle income country. So he chose that, that's the World Bank poverty line for $3.6 per capita. He used that and he found something very interesting. He found that rural poverty in India is about 25%, according to new poverty line. That in Maharashtra is 26.5%. So rural poverty in Maharashtra is deeper than India as an, on which is on the general Indian case. Not Sir, only that, sorry, yeah, so sorry to interrupt. What was this percentage earlier? the earlier, no, this is a new poverty line, right? Yeah. But You've changed the according to poverty. new poverty line, it is 25%. So what was 25% in, so it was around 40-45% way back. okay. But so new data is about 25%. Maharashtra is 26.5%. Bihar is 23%. Right? If you look at the major states, only Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, and Odisha are doing worse than Maharashtra. So Maharashtra has now a particularly, even at all India level, Maharashtra now has a much higher incidence of rural poverty. जेब में जाता है। ये सबसे अहम मुद्दा है इसका। और आपने जो मुद्दा बोला कि ये कॉन्ट्रडिक्शन तो बहुत है इसमें, करप्शन तो बहुत है, इसका यूज करके पॉलिटिशियंस इलेक्शन जिताते, ये सब होता है इसमें। लेकिन फार्मर को पैसा मिलता है अच्छा, लेकिन इतना भी नहीं मिलता कि वो बहुत ये। और एक बोला जाता है, व्हाइट कॉलर लोग बोलते हैं कि बड़ा बागायतदार, एक टर्म है, बड़ा बागायतदार ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि वो जो इनकम मिलता है उसको, तो ये जो 7 पे वाला प्यून जो मिलता है, पिन को जो इनकम मिलता है, उससे भी कम इनकम उसको मिलता है। और ये 12 महीने उसको काम करना पड़ता है रात दिन, और उसके साथ सिर्फ शुगर केन लगा के नहीं चलता। तो वो क्या, डेयरी इंडस्ट्री भी उसका सपोर्ट बहुत करती है। स्पेसिफिकली पश्चिम महाराष्ट्र में आप जब देखोगे तो डेयरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर का कोई एक फार्मर सुसाइड नहीं करता है, जो आपको मराठवाड़ा और विदर्भ में दिखाई देता है। तो ये महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में आपको नहीं दिखाई देता, या नॉर्थ महाराष्ट्र में भी आपको नहीं दिखाई देता। तो आप अगर देखोगे तो शुगर केन, हॉर्टिकल्चर और
हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा हम ग्रेप, पोमोग्रेनेट, ओनियन और पूरे देश में। डेयरी इंडस्ट्री में भी हम लीडिंग में काम करते हैं महाराष्ट्र। लेकिन अब ये सब अच्छी जो कंडीशन थी वो अभी अच्छी नहीं रही है, वो डिटोरिएट होती जा रही है सभी इंडस्ट्री की। आज ही विस्मा जो है, जी, आई थिंक हाँ आदिनाथ नेटवर्क, हाय हाँ सर। यस, आप अगर आपका वीडियो ऑफ करके, आपका नेटवर्क जा रहा है तो ऑडियो बीच बीच हाँ में थोड़ा, तो वीडियो ऑफ ठीक करके बात है, करेंगे, अच्छे से आएगी। मैं जी वीडियो ऑफ करता हूँ। जी जी, कंटिन्यू हाँ कीजिए। हाँ, ऑफ करता हूँ। या हाँ, हाँ। वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कल ही एक प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी एमएसपी क्या होती है शुगर केन के लिए, वो मिनिमम सेलिंग प्राइस रहती है शुगर की, वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये एफआरपी भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है और एमएसपी भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है शुगर केन की, शुगर की। तो अभी हो रहा है ऐसा कि 3-4 साल से एफआरपी बढ़ रही है, लेकिन एमएसपी वही पे है, 31 रुपीज पर केजी ऐसी एमएसपी है। और एफआरपी में बढ़ती जा रही है 4 सालों से। तो उनका कहना है कि हम ये एमएसपी बढ़ा के दे दो, ताकि शुगर के प्राइसेस हमें बढ़ाने होंगे। अगर ये नहीं हुआ तो शुगर फैक्ट्री सब खत्म हो जाएंगी इस साल से। तो उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है, अगर आपने नहीं बढ़ाया तो हम शुगर मिल्स इस साल नहीं चलाएंगे, ऐसा कुछ दिया है उन्होंने। तो ये सब अभी चल रहा है। डेयरी का भी आपको सबको पता है, डेयरी में पैसा अच्छा मिलता है फार्मर को, लेकिन उसका खुद का लेबर जो है, जो हातेकर सर ने और दीपा ने भी बोला, और ये सीमा कुलकर्णी मैडम ने भी बोला कि खुद का लेबर की कॉस्ट उसमें नहीं रहती है, लेकिन उसके जो रेट है दूध के, हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम है और उसका रेट भी कम मिलता है। तो ये भी अभी दूध धंधा भी हमारा प्रॉब्लम में आ गया। हालांकि हमारा दूध इंडस्ट्री में हम सबसे आगे है, लेकिन ये हालत अभी महाराष्ट्र की ये हो गई है। आपको सबको पता है कि महाराष्ट्र के जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो हो गई, जो कुछ भी हो गया अच्छा इसमें, तो यशवंतराव चौहान साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने एग्रो इंडस्ट्री को और कोऑपरेटिव को बढ़ा दिया। उसके बाद वसंतराव नाइक साहब ने ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। उसके बाद शरद पवार साहब ने हॉर्टिकल्चर और कोऑपरेटिव को, ये इसके फल हम आज भी चख रहे हैं, लेकिन अभी ये डिटोरेट होता जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा सुधार आने की आवश्यकता है। दूसरी जो आपने बात की थी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के बारे में, तो एक्सपोर्ट बैन ये सबसे बड़ा हथियार गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया है। और आप पर लास्ट 5 सालों से आप देखोगे तो हर एक चीज पे उन्होंने जो जो भी उपज है फार्मर की, उसके हर एक चीज जो इम्पोर्टेंट कमोडिटी है, उसमें आप गेहूं ले लो, चावल ले लो, चीनी ले लो और प्याज ले लो, इसमें सब पे 2-2, 3-3 बार एक्सपोर्ट बैन लगाया गवर्नमेंट ने। और उसका फल भी उनको मिला लास्ट इलेक्शन में। अपने हमने एक स्टडी किया था पूरे कंट्री का। तो ये जो है मैंने बोला वो गेहूं, चावल और चीनी और प्याज और तूर, इसमें जो कुछ एक्सपोर्ट बैन लगाया था, इसका हिसाब उनको मिला। तो 76 कैंडिडेट्स उनके इस बेल्ट में जो है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा के, उनके पराभूत हो गए 76 एमपी जो थे। और महाराष्ट्र में तो आपको पता है कि 14 सीट्स उनके हाथ से गई निकल के। तो इसके बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और ये सब एक्सपोर्ट बैन जो ओनियन पे था वो उन्होंने उठाया। इडिबल ऑयल का जो खुली आयात करते थे उस पे उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, और ये सब बाद में करते गए वो। लेकिन तब तक बहुत नुकसान फार्मर को सहना पड़ा। और आगे जाके अभी कुछ बचा है उसके पास फार्मर के, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी वो सब प्याज ले लो आप या सोयाबीन ले लो लास्ट ईयर का, वो सब आप व्यापारियों के हाथों में है। तो अभी फार्मर को इसका फायदा कुछ नहीं मिलेगा, वो व्यापारियों को फायदा मिल रहा है अभी आप देखोगे तो। यस और आदिनाथ आप, जी, मुझे एक सवाल पूछना था। आपके पास बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन है, बट हाँ, सवाल भी आ रहे हैं। तो आप जो ये सभी बातें बता रहे हैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अलाइड क्रॉप्स, अलाइड तो इसमें आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति अच्छी थी और अभी नहीं है, अच्छी थी अभी नहीं है। तो जो आरोप अभी अपोजिशन कर रहे हैं कि महाराष्ट्राचा विकास दुसऱ्या राज्यात नेला जातोय, महाराष्ट्र का डेव्हलपमेंट महाराष्ट्र के पास अभी नहीं रहा है, नंबर 1 नहीं रहा है, हम महाराष्ट्र को नंबर 1 वापस बनाएंगे, ऐसे सत्ताधारी बोल रहे हैं और विरोधक भी बोल रहे हैं आज। तो ये बात सही है क्या? महाराष्ट्र नंबर 1 क्यों नहीं रहा है?
नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैं अभी पूरे रूरल महाराष्ट्र में घूमता हूँ, फार्मर के साथ बातचीत करता हूँ, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी जगह प्रॉब्लम चल रहे हैं। सोयाबीन लो, कॉटन ले लो, शुगर केन का इशू चल रहा है, मिल्क का इशू चल रहा है। ये सभी अभी महाराष्ट्र नंबर वन इसी में नहीं रहा। कुछ एक दो चीजों में रहा है, अभी शुगर केन में हम लीडिंग में है, बाकी कुछ चीजों में है, लेकिन बहुत सी चीजों से हम पीछे हट गए। आपने जो बोला कि ये हमारे महाराष्ट्र के सब प्रोजेक्ट बाहर जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा था कि यहाँ के जो स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही थी, आपको पता है रोजगार हमी योजना, मनरेगा, ये महाराष्ट्र में पहले इम्प्लीमेंट हो गई थी शरद पवार साहब के और उन्होंने बाद में ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर दी, बाद में जब वो कृषि मंत्री बन गए थे उसके बाद। और फलोत्पादन जो है, हॉर्टिकल्चर, ये भी महाराष्ट्र में पहले स्कीम बनी थी सबकी, सबसे पहली, और उसके बाद वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो गई। इसी तरह के अगर प्रोजेक्ट जाते हैं तो ये अच्छी बात है, ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता है, ये रिप्लिकेशन अच्छा होता है। लेकिन प्रोजेक्ट जा रहे हैं, ये तो गलत बात है। और ये एग्रीकल्चर में तो हम लीडिंग नहीं रहे। अभी आप देखोगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब स्टेट है वो आगे जा रहे हैं, हमारे दाक्षिणात्य जो राज्य है वो हमारे हमसे आगे जा रहे हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, उनका एक्सटेंशन सर्विस सबसे अच्छा है। कि आप महाराष्ट्र में देखोगे सबसे बड़ा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्सटेंशन के लिए काम करने के लिए जो काम करता है, वो सबसे बड़ा हमारे 28,000 की स्ट्रेंथ है, उनकी स्टाफ है उनके पास। लेकिन एक्सटेंशन का कुछ भी काम नहीं हो रहा है वहां पे, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। सभी स्कीम आप देखोगे गवर्नमेंट के, सभी स्कीम में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप क्रॉप इंश्योरेंस ले लो या कौन सी भी स्कीम ले लो, सभी में भ्रष्टाचार होता है, आपको दिखाई देगा। तो ये सभी अभी हालात है महाराष्ट्र के। Yes, the latest CSDS survey, MIT CSDS survey also pointed out that inflation, unemployment, and corruption are the three biggest issues which voters consider Maharashtra is facing. आदिनाथ जी, मैं लोग सवाल पूछ रहे वो पूछना चाहूंगी, लेकिन एक सवाल था, आपने क्रॉप इंश्योरेंस की बात की, तो क्या आप हमें अहम मुद्दा बता सकते हैं, जैसे कि हम सभी जर्नलिस्ट आने वाले समय में इस पे स्टोरीज करने वाले हैं इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्रॉप इंश्योरेंस और फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी में फार्मर्स आज कौन सी दिक्कतें फेस कर रहे हैं महाराष्ट्र में, या इनको ये सब एकदम सहायता से मिल रहा है? क्रॉप इंश्योरेंस का जो चल रहा है, फर्टिलाइजर सब्सिडी ठीक है, उसमें ज्यादा कोई ये नहीं, थोड़े से रेट बढ़ गए। लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी 1 रुपए में आपको क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा, ये स्कीम लॉन्च कर दी गवर्नमेंट ने। ये सभी जगह हो गए, फार्मर ने भी सब ये कर दिया, फॉर्म सब भर दे सभी ने। लेकिन जब नुकसान होता है, अभी इस साल बहुत नुकसान हो गया। लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत बारिश कम हो गई थी, तो उसी हिसाब से नुकसान हो गया। इस साल क्या हो गया कि ज्यादा बारिश हो गई, 117% से ज्यादा बारिश अब आपको देखने को मिलेगी। रिटर्न मानसून और सभी जगह बहुत बड़ी बारिश हो गई, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन अभी सब इलेक्शन में लगे हुए हैं, पंचनामे जो करने चाहिए वो नहीं होते हैं पंचनामे। और जो कंपनी जो है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी, वो भी फार्मर को नहीं ये कर रही है, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है फार्मर को पैसे देने में। तो अभी ये सब चल रहा है, फार्मर डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये दे दो, हमें, हमने इंश्योरेंस क्लेम किया है, लेकिन आप उसके साथ नहीं देखते। लेकिन ये अभी होते हुए नहीं दिखाई देता। दूसरा मुद्दा जो आपने बोला इन्फ्लेशन का मैं हातेकर सर से भी पूछना चाहूंगा। मुझे, मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन की जो कुछ डेफिनेशन है वो थोड़ी गलत है। अगर फार्मिंग सेक्टर से आप देखोगे तो ये सब बहुत गलत डेफिनेशन है, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि कुछ लोगों को सस्ते में मिलना चाहिए, इसलिए कुछ लोगों के ऊपर आप अन्याय कर रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं। और ये कम लोग नहीं है, अमेरिका में, ये इजराइल में, या और ये प्रोग्रेसिव स्टेट है, वहां पे 3, 4, 5% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अब महाराष्ट्र में 50% से ऊपर लोग इस पे डिपेंड है, उसके रोजी रोटी, उसका पेट उस पे है। लेकिन हम उसके दबा रहे, उस पे बोझ डाल रहे, क्योंकि ग्राहकों को सस्ते में मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का ये है, क्योंकि उसको, उनको वोट चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये गलत है। ये डेफिनेशन में हमें कुछ सुधार करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है गरीब लोगों के लिए, तो गवर्नमेंट खुद को जेब से निकाल के दे दो ना उनको, अलग जी, कोई सब्सिडी का पैटर्न बना लो, ऐसा होना चाहिए मेरे yes. हिसाब Adinath ji, let's से। ask Neeraj Hatekar sir on this note only. Neeraj sir, if you could switch on your video, that is like comfortable for me. Sorry to Yeah. bother you, but yes. So that question and another question Jyoti had asked, that weren't there pre-election soaps earlier too? And so transactional politics has always been there.
So two questions. If One you is could, first, if you could combine both. I will start talking with Adinath's question. I think in a sense he is right, because the way we measure consumption, inflation, for example, consumer price inflation, then that's really based on what is the price paid by the consumer in there. Right? So there is a survey, and then the rural and urban consumers, what are the commodities that they buy, how much they spend on those commodities, and then those things are aggregated into a consumer price index. And the target really for example, for the Reserve Bank is the consumer price index of they have to maintain the inflation at 4%. Now, very often there is a gap between what farmers get and what the consumers actually pay. So inflation can be high for consumers. In fact, it can be much higher than what is recorded in the data, right? Because for instance, the if you are a poor person, then you actually you spend a lot of your money on food, and vegetable prices, for example, last year have increased by 30% from the consumer's point of view. So it hits there badly, but because it doesn't take into that, it does not really reflect the prices which farmers are getting on the ground. We should use a poverty line appropriate for lower middle income. So he chose that's the World Bank poverty line for $3.6 per capita. He used that and he found something very interesting. He found that rural poverty in India is about 25%, according to new poverty line. That in Maharashtra is 26.5%. So rural poverty in Maharashtra is deeper than India as an, on which is on the general Indian case. Not only that, Sorry, yeah, so sorry to interrupt. What was this percentage earlier? this is a new poverty line, right? Yeah, yeah. But They've changed the according to poverty. new poverty line, it is 25%. So what was 25% so it was around 45% way back. okay. But so new data is about 25%. Maharashtra is 26.5%. Bihar is 23%. Right? If you look at the major states, only Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, and Odisha are doing worse than Maharashtra. So Maharashtra has now a particularly, even at all India level, Maharashtra now has a much higher incidence of rural poverty compared to states like Bihar, right? Which is something which should be a wake-up call for all of us, because we always thought that Maharashtra was a prosperous state and a country with a high per capita income, etc. But that has not definitely translated to rural poverty. Another number I'll tell you. We took data from the government of India only. They have something called a Mission Antyodaya survey, where they give you details about basic facilities in every village in the country. So whether there is a connecting road, whether there is drainage facility, whether there is a school, whether there is access to ration shops, and we created an index of rural backwardness, and we find that Maharashtra ranks 27th from top, right? So even states like Bihar, UP, Gujarat, Kerala are at the top, but we are at number 27. And a very large chunk of Maharashtra, not only Vidarbha Marathwada, but also parts of Konkan, right? Parts of districts like Satara are doing very badly in that. We also found that employment has to do with infrastructure. So we found that whenever local rural infrastructure is there, for example, there are schools, there are tap water, there is access to easy access to water, easy access to schools, easy access to ration shops, women's employment goes up in those areas, because these areas are particularly important for women to work, right? Now, I have also been looking at the Government of India data, which is called Periodic Labor Force Survey, which is data on basically every year they come out with a rural urban data set, and which is about what people are doing, so employment characteristics. So we found that rural unemployment in Maharashtra is quite low actually, right? It's 2.5%, right? But if you don't just look at employment figures, because if you look at the all India picture, then poorer states actually have lower unemployment rates. If you look at states like Kerala or Goa, which are, where rural areas are wealthy, unemployment rates are high for women as well as men. That is because people can afford to wait till they get a good enough job. But for poorer states like Chhattisgarh, Odisha, etc., if you're poor, you can't afford to wait, right? So you have to find some employment.
If you are poorer, there is less, you can't really afford to be unemployed. And so unemployment rates are low. And therefore, in Maharashtra also, unemployment rates are low, which is not a big thing. The problem is, what is the kind of employment that women are getting or men or people are getting? So if you look at rural Maharashtra, about 75% of women are in the labor force, right? But 40% of those are unpaid family work. So they are working in farms, they are working in, say, relative shops, right? Restaurants owned by somebody and in their relatives, but they're not being paid for it. So they've been doubly exploited, right? Because they're doing work at home also, which is not paid for, and they're also working in relative shops or establishments without pay. Right? So 40% of women are doing that. Right? About 30% of women are casual laborers. And the wage rate for casual labor is Maharashtra around 220. That's the average wage rate, daily wage rate, which is one of the lowest in the country. So there's a bunch of states in the country like Madhya Pradesh, Gujarat, for example, Maharashtra, where women's labor daily wage rate is on the lower side in the country. Even Odisha have a higher, Odisha, Bihar also have a higher women's wage rate compared to Maharashtra. Then there are about 19-20% women who are self-employed. What do you mean by self-employed? So they are doing either they have some dry land on their name which they are cultivating, or they are running some very small establishments and earning around 10 to 11,000 rupees per month from those. And only about 9% of women have steady jobs. But when you get steady jobs, don't be misled. The data contains anything which pays you a monthly salary as steady jobs. And when we looked at the data, then a lot of these women are also maybe domestic helps, because they were getting these jobs are not, these jobs don't give you any security, a lot of those jobs necessarily. And the average earnings in jobs are around 12 to 13,000, right? So even when unemployment rates are low, this is the quality of employment which we are having, which I think is very, very poor, right? If you look at it, if you give a caste-wise, gender-wise distribution, then the most disadvantaged group of people in our state are Dalit rural women. The most advantaged are upper caste urban men across occupations, right? So basically, there is a large structural inequality in this society. So it's gender, caste, and locations, right? And which are the critical problems really? Now, what has happened again? If you look at incomes data, right? The Center for Monitoring Indian Economy brings out incomes data, and they tell you what different households have been earning. So if you look at it caste-wise, then tribal incomes have not increased at all during the last year. So April 23 to April 24, inflation has gone up, but tribal incomes are almost unchanged. Dalit incomes have increased a little less than the inflation rate, and the upper caste incomes have gone up the fastest, right? The incomes at the lowest 40% of the population have changed only a little bit, have not kept pace with inflation. Incomes at the top 10% have increased about 9 to 10 times that of the bottom 10%. So income-wise also there is a huge inequality that's there. Right. Now, when this inequality happens, what happens? We are still in a democratic setup. So governments require some wider acceptability, some wider consensus to be in power. Right. Ultimately, the poor have to also vote for you. Right. What this economy is doing is the economy is really in the control of a top 10% of the upper caste men, contractors, politically well connected kind of, and that money is circulating there. It is not coming to it's not creating employment for the poor people. It's not creating jobs for poor, right? But people are observing that there is increasing inequality. That people in my village, some contractor in my village now has a bungalow, has now bought another Fortuner. They also see all those kinds of things. And there is discontent, definitely discontent of not getting any share of what they see as prosperity. Right. So if a government has to be, when there is election, then you have to have the poor people vote, you have to create a wider consensus. The correct way to create a wider consensus is to do genuine welfare, which means that ordinary people can aspire for a better life. They can see better jobs, better education, better scopes of. We don't have that. So what we are now doing, what we have been calling these, I don't know why we should call them welfare measures, right? This Ladki Bahin and 3 gas cylinder.
This is simply an attempt to buy the consent of the poor so that these people can stay in power and do what they continue to do what they are doing over the years. So it is just saying, please take this and keep quiet, right? Because that's the only way poor people will now vote for them, right? So that is the reason why in 11 states in the country, these schemes have been implemented. That's just a transactional politics. That is not welfare. And I think it is not good for a democracy because it doesn't create citizens who think, who vote on values. It creates citizens whose votes can be bought. Right. Now, related to Deepa's question about even when there is discontent, why don't, why doesn't that reflect in the seats? One, there is no option, right? Because there are groups, there are organizations which work with the community. They really work in the public interest, but they don't have the electoral resources. And because they don't have the electoral resources, even the community says that as long as cultural programs are there, as long as a movement is there, we'll be with you. But we will not vote for you in elections because we don't think you have the resources and the power to be there. Right. So basically, there are no options. I don't think there are anywhere, any constituency, there is a credible option which is apart from the standard established parties who already have a stake in the existing structure. Nobody wants to change the existing structure. Even when I was now thinking of the Congress manifesto, it's just saying instead of 1,500, we'll give you 2,000 because the set of people are the same. Right. That nobody wants a fundamental drastic change at the change in the power relationships or anything of that kind. Yes. Same story will be told to us. Hmm. And how people vote, who gets the vote really now depends upon electoral management, who has the resources, who can go there, right? Yeah. Okay. So, Yeah, so yes. politics has always been there, but now I think the inequalities are so extreme now. And that, it has become an easy and a very, very blatant way of getting this done. Yes, before I move to Seema Kulkarni to discuss gender uh, perspective of this whole discussion, I think Samira Khan has a question for you, Neeraj sir. If you can read that, or should I read it out for you? Can you read it out for me? Oh, yes. Is this new poverty index definition as elaborated by Surjit Bhalla's believable or just a matter of moving categories or changing definitions? No, Surjit Bhalla has a simple point. And that's true because if you look at the older, the calorie-based norm, then that calorie-based norm was only for 2,200 calories, that it was a very basic subsistence kind of a norm, right? And if you look at that Tendulkar line, that the Tendulkar line is something like 5,000 rupees now per month for a family of five, right? So which obviously there'll be nobody below that because nobody will survive below that poverty line. So the data will not find anybody there. So what Surjit Balla is saying is that, and there's a general talk of this, that if a poverty line is not too conservative, it has to involve a little bit of better standards of living for at the bottom of the population. So if India has now slowly entered the lower middle income phase, there's a World Bank has already established line for lower middle income. So let's use that line and see who is doing. So ultimately, the result really that we're getting is a relative result, right? So it's I think it's just in line with the international discussion of what the poverty line should be. Yes, and I think further discussion can be continued on this topic, but we have to move to Seema Kulkarni now. Seema, welcome and thank you. So I'll keep my question very short. I wanted to understand, we are hearing all the stories of Lakpati Didis and what not. So where do you see rural farmers, particularly female farmers, standing on the Lakpati Didi or their financial status and development? Yeah. Thanks, Alka, and everybody from NWMI. I think both Deepa and Neeraj have already sort of laid out, a sort of a background to both in terms of what the economy has to say, but also I think the on-ground insights that came from Deepa's presentation. I on what is happening to our women farmers in Maharashtra. And I would like to really begin with also, the starting point, especially in the context of Maharashtra, really is whether Maharashtra, the whole political scenario in Maharashtra, is it really
even concerned about farmers and agriculture. Forget about women farmers. But I think the overall distress that we are seeing in agriculture, and I think it is manifested in very many ways. Farmer suicides is one of the most extreme forms of distress that we are witnessing in Maharashtra, and it is on the increase. So, we just 3 years ago, we had NCRB data that was talking about 20% of all the suicides in Maharashtra, in India, are from Maharashtra. And now that has gone beyond 30%. And I don't think we should be at all quiet about this. I think we have distress migration. Inter-district and interstate, but it is also within districts, within rural, which is also something that we should be concerned about. So what we are seeing on the ground clearly is that women are in multiple tasks in agriculture. So the multiplicity in a way is also, substantiates what Neeraj sir said about the distress. So all the data that you see in terms of unemployment going down, women's labor force participation on the rise, clearly is driven by agriculture, and within agriculture, it is the women. So you have a large number of unpaid family workers who are women, and the wage differentials are huge. So this is the reality that we are talking about. In fact, in the self-employment category, there's a 50%, women are earning only 50% of what men are in the rural context, and elsewhere it is anything between 60 and 75%. So we are actually dealing with, a crisis of this scale, which from what Mahila Kisan Adhikar Manch and even the organization SOPECOM that I belong to, the kind of work and research that we are doing clearly is highlighting the gendered nature of the agrarian crisis. I think most of the agrarian crisis, unfortunately, the narratives have stayed on the question of minimum support price. This is not to undermine that issue at all, but I think it's really calling for a very, a larger structural reform within agriculture, but then also paying attention to these most vulnerable categories, which are in fact, sort of holding the sector together. So whether it is women, and women, when we say, these are largely from the Adivasi, Dalit, OBC, and NT and denotified communities. So this is the picture that we see on the ground. Now, against this, what do we see in terms of what the governments have to offer? You mentioned Lakpati Didi, there is a drone Didi. So, you have these multiple schemes that are talking about doing a lot of uddhar for women farmers. But clearly, we are seeing that that has failed miserably in terms of implementation, but also in terms of the very design of the programs. We are talking about, SHGs alone creating that revolution. And without really investing in women in any significant way, in terms of the crisis that I just described, there's no land ownership. We have no data in the public domain on land ownership or any other asset ownership as well. And yet, we have these schemes which are, as was said earlier, this is only sort of a populist kind of a scheme which does not actually uplift and very, in a robust manner, support women farmers the way we would like to see. So Lakpati and Drone Didi particularly, I think, needs to be seen and understood with a lot of caution, because this is a scheme which has a lot of collaboration with the multinational corporations, which in fact are leading to the kind of distress that we are seeing in agriculture. So you have these large seed companies, fertilizer companies, pesticide companies, which are partnering in the drone Didi schemes. So who is it really benefiting? I think the
entire investment in agriculture is moving away from public and farmer investment to what is, in quotes, infrastructure development, rural infrastructure development. So it includes investments for Adani, Ambani, the malls that are being, in the name of agriculture, or the drones that you see. So the question really is, what does it mean to that woman farmer? And interestingly, we are looking at not just 20 and 30%, but in Maharashtra, it is more than 75% of the rural women who are engaged in agriculture. So it's high time that we start talking about, shifting that narrative in agrarian distress to understand that this is a women-led agriculture, unfortunately in distress, and this has to shift where women-led agriculture becomes more robust if there are very strong investments that come into agriculture, not the kind that we are seeing in terms of Lakpati and Drone Didi, but much more in terms of ensuring that rights over assets, and more specifically land, and I'm not only talking of private and inheritance land, but also public redistribution of land. So I think land reform becomes very central if we really want to bring women also to the center stage. PM Kisan is another scheme that I would just like to say, talk about, and then maybe we can pause. So PM Kisan is another direct income transfer scheme, and a large chunk of the agriculture budget from the center actually is towards this income transfer scheme. But when we look at the picture on ground, and this is also through our micro studies, what we're clearly seeing is that even among the land owning households, forget about the women's access to land is, we already see a very limited number of women actually benefiting from this income transfer. But even among the land owning households in Maharashtra, it is not crossed more than 20 to 25%. And this is through some of the micro studies. So I think there is a lot to worry about in terms of what Maharashtra and Maharashtra's political, the whole political scenario is really thinking about in terms of uplifting agriculture. It cannot be through these populist schemes where people are just being turned into supplicants. They're just subjects, really, and not thinking individuals. So, what we strongly would propose is really even just one small example of, we have this entire livelihood mission which focuses on women. Women are at the center of it, but everything is only about self-help groups. So women should start small and remain small. They can never go big. And here it is only volunteerism that is appealed to. So you have these Pashu Sakhi. Hi, has the video Community. Yes, yes. I think, sorry, Seema, I could hear you till Pashu Sakhi. So if you Okay. could quickly repeat yourself. Okay. Can you hear me now? Yes, yes, yes. Yeah. So I just wanted to point out that, in the absence of a human resource policy, we have a lot of volunteerism that is expected out of women in the rural context. So you have in the rural livelihood mission, you have these Pashu Sakhis, Krishi Sakhis. So all of them are expected to volunteer. So I think that is also something that we should be talking about, right? This is work that women are doing and that should be paid for. So I think these are broader questions, and I'll leave the group with just two issues which are burning issues according to us in Maharashtra. One is the farmer suicides and the women who are left behind. And here I would like to point out that we have only data for 10% women who've committed suicide themselves. Because women are not recognized as farmers, we don't know how many are invisible deaths of women farmers, because there are, numbers of housewife suicides far outnumber the number of suicides by farmers. So what is really, who are these women? We have no disaggregated data for that. And we believe, working on the ground, that these are women in distress who are taking credit from microfinance institutions, are also pushed to a corner and forced to commit suicide. So I think it's high time we start looking at farmer suicides in both its visible and invisible forms. Yeah. And the second question is about
which are invisible here as part of the Koita system. And here we have the Gopinath Munde Mahamandal Welfare Board, which is completely defunct and which has not mandated the sugar factories to really put in money for the welfare and economic rights of workers. So I'm sorry if I've overstepped, but I'll No, stop here. absolutely, Seema. That all were great insights. And I think for journalists, you have given story ideas also, pressing the important issues. Adinath, if you could switch on your video. I wanted to ask you 2-3 important questions. जैसे कि हम सावंतवाड़ी के अडारी गांव से दीपा हमें लेके आई, फिर नीरज सर ने हमें पूरे देश के दृष्टिक्षेप से महाराष्ट्र को दिखाया, हम कहाँ बैठते हैं, कितनी रूरल डेवलपमेंट हुई है, फिर सीमा मैडम ने हमें बताया कि क्या चीजें हो रही है और पॉपुलिज्म कैसे काम कर रहा है। आप अगर हमें ये बता पाए कि एमएसपी का इशू आज क्रक्स का इशू माना जाता है, बट मेरे हिसाब से केवल एमएसपी की एक जंग है, जैसे सोयाबीन, तूर, कॉटन की बात हम करें। दूसरी बात है, जैसे मार्केट में कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट जो इंटरफेयर करती है, हस्तक्षेप करती है, तो हम जर्नलिस्ट जब इलेक्शन अभी कवर करने जाएंगे, तो आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे देखने चाहिए ये दोनों सब्जेक्ट्स को हमें? थैंक्स अलका। पहला सवाल जो आपने एमएसपी के बारे में पूछा, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट जो है सब क्रॉप को जो होता है वो एमएसपी नहीं देती। 23 क्रॉप्स होते हैं, उनके लिए एमएसपी अनाउंस की जाती है। और बहुत से लोगों के मन में, शहरी लोगों के मन में या जर्नलिस्ट के मन में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि एमएसपी है तो ये एमएसपी फार्मर को दी जाती है। ऐसा नहीं होता है, ये अनाउंस होती है सिर्फ, ये लीगली बंधनकारक नहीं है गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट को। और फार्मर यूनियन के जो कुछ भी आंदोलन चल रहे हैं अभी, उनका ये कहना है कि आप बंधनकारक करो, लीगली कुछ तो बॉन्डिंग होना चाहिए। आप एमएसपी अनाउंस करते हो लेकिन हमारा ऊपर जो कुछ भी निकलता है वो आप नहीं लेते हो। एमएसपी को कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है? अगर गवर्नमेंट प्रोक्योर करता है तो भी एमएसपी इम्प्लीमेंट हो जाती है। अब 4-5 साल की बात आपने की, तो कोई भी क्रॉप के लिए एमएसपी का इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में किसी भी स्टेट में नहीं हुआ है। पंजाब हरियाणा में गेहूं और राइस जो है, चावल, उसकी एमएसपी के हिसाब से प्रोक्योरमेंट होती है, लेकिन महाराष्ट्र में ये नहीं होता है। महाराष्ट्र में सोयाबीन और कपास, ये दो ही क्रॉप ऐसे की जिसके एमएसपी के हिसाब से गवर्नमेंट किसानों के पास से खरीद लेती है। तो ये एक बात है। और अभी हर साल किसानों की डिमांड होती है कि आप ये केंद्र जो है एमएसपी के हिसाब से आप खरीद लेते हो, ये केंद्र आप शुरू कर दो, लेकिन ये केंद्र नहीं शुरू होते। अभी क्या हुआ है, अभी इलेक्शन लगे, इसलिए सोयाबीन के केंद्र जो है, परचेस प्रोक्योरमेंट के केंद्र, ये अभी गवर्नमेंट शुरू कर रही है। इससे लास्ट ईयर ये नहीं हुए थे। तो अभी सोयाबीन का रेट जो है वो 4000 के नीचे है, 4800 के ऊपर एमएसपी है, लेकिन अभी मार्केट का रेट जो है वो 4000 के नीचे है। और ये किसी भी किसान को ये रेट नहीं पड़ता। तो ये सबसे बड़ा इश्यू हो रहा है। और ये हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत लो है, क्योंकि ये रेन फेड एरिया है सब। अगर आप पूरे महाराष्ट्र की थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा मैं आपके लिए कि आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन है महाराष्ट्र के, वो 9 है। 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और अलग अलग एनवायरमेंट सभी जगह, सॉइल के टाइप अलग अलग है। और खरीफ एरिया जो कल्टीवेशन के अंडर रहता है वो 150 से 165 लाख हेक्टेयर तक रहता है। और आपको पता है कि लैंड होल्डिंग कम हो रहा है महाराष्ट्र का, ये सब बोलते हैं। 1970 में वो 50 लाख लैंड होल्डर से अभी वो आंकड़ा 1 करोड़ 52 लाख तक गया, तिप्पट हो गया ये अभी। तो ये लैंड होल्डिंग बहुत कम होती जा रही है। 1970 में वो 4.28 हेक्टर पर फैमिली थी, अभी वो 1.34 हेक्टर हो गई है। तो इतने से छोटे से एरिया में अगर वो किसान सोयाबीन लगाते, मानो 3 एकड़ है, 3 एकड़ के सोयाबीन 15 अगर क्विंटल आ गया, आप ऐसे समझ, एवरेज 5 क्विंटल ऐसा रहता है। तो 15 क्विंटल अगर आ गया तो 15 जो 60,000 रुपए उसे मिलते हैं। 60,000 में वो कैसे अपना कुटुंब चलेगा? और उसके बाद रब्बी और उनाल सीजन जो रहता है वो उसमें नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास पानी ही नहीं है। और ये 80% रेनफेड एरिया है महाराष्ट्र का। और ये विदर्भ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और खानदेश, सबसे बड़ा एरिया रेनफेड है वहां पे। 20% एरिया इरिगेटेड है।
और इरिगेटेड एरिया में जो मेन क्रॉप है उसमें शुगर केन है और हॉर्टिकल्चर, उसमें सब्जियां रहती है या फल रहते हैं, ये सब इसमें रहता है। तो ये एमएसपी के बारे में जो बोल रहा था, तो एमएसपी इम्प्लीमेंटेशन है, ये सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। शुगर केन में एफआरपी रहती है, शुगर केन का आपको सबको पता है, वो देना बंधनकारक रहता है फैक्ट्रीज को। अगर नहीं दिया तो लीगल एक्शन होती है फैक्ट्रीज पे। शुगर कमिश्नर जो बैठे पुणे में रहते हैं, तो वो जब्तियां कर देते फैक्ट्री की, ये लीगली देना पड़ता है इनको, और ये शुगर फैक्ट्रीज उसको एफआरपी देती है हर चीज को। उनका भी अब इश्यू चल रहा है। ये सबसे अच्छी जो कुछ खेती महाराष्ट्र में चल रही है, 10 से 15 लाख हेक्टेयर पे शुगर केन होता है। आपको पता होगा सोयाबीन 50 लाख हेक्टेयर पे होता है, कॉटन 40 लाख टू 45 लाख हेक्टेयर पे होता है। सबसे बड़े एरिया में ये सब होता है। और शुगर केन सिर्फ 10 लाख हेक्टेयर या 14 लाख हेक्टेयर, तो ये इसमें रेंज रहती है इसकी। तो सबसे ज्यादा पैसे शुगर केन से मिलते हैं। ये क्रॉप को सबने बदनाम किया है, लेकिन अभी जो पैसा महाराष्ट्र में आ रहा है वो शुगर केन से आ रहा है। ये मुझे लगता है कि सबको ध्यान में रखना चाहिए। और इसका जी टर्नओवर जो है, आदिनाथ जी, अभी अभी हाँ, सीमा जी ने जो मुद्दा उठाया था गोपीनाथ महामंडल का, और शुगर केन कटर्स के लिए जो ये तो काम सब कर ये सब है, ये कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है इसमें, बहुत है। करप्शन है, सभी सभी चीजें है। लेकिन अभी आप देखोगे तो इसका टर्नओवर जो है इंडस्ट्री का, शुगर केन का महाराष्ट्र का 1,80,000 करोड़ का टर्नओवर है। और ये सब पैसा अदानी अंबानी की जेब में नहीं जाता है, ये सर्कुलर इकोनॉमी में आता है, फार्मर के जेब में जाता है। ये सबसे अहम मुद्दा है इसका। और आपने जो मुद्दा बोला कि ये कॉन्ट्रडिक्शन तो बहुत है इसमें, करप्शन तो बहुत है, इसका यूज करके पॉलिटिशियंस इलेक्शन जिताते, ये सब होता है इसमें। लेकिन फार्मर को पैसा मिलता है अच्छा, लेकिन इतना भी नहीं मिलता कि वो बहुत ये। और एक बोला जाता है, व्हाइट कॉलर लोग बोलते हैं कि बड़ा बागायतदार, एक टर्म है बड़ा बागायतदार, ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि वो जो इनकम मिलता है उसको, तो ये जो 7 पे वाला प्यून जो मिलता है, पिन को जो इनकम मिलता है, उससे भी कम इनकम उसको मिलता है। और ये 12 महीने उसको काम करना पड़ता है रात दिन, और उसके साथ सिर्फ शुगर केन लगा के नहीं चलता। तो वो क्या, डेयरी इंडस्ट्री भी उसका सपोर्ट बहुत करती है। विशेष स्पेसिफिकली पश्चिम महाराष्ट्र में आप जब देखोगे तो डेयरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर का कोई एक फार्मर सुसाइड नहीं करता है, जो आपको मराठवाड़ा और विदर्भ में दिखाई देता है। तो ये महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में आपको नहीं दिखाई देता, या नॉर्थ महाराष्ट्र में भी आपको नहीं दिखाई देता। तो आप अगर देखोगे तो शुगर केन, हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा हम ग्रेप, पोमोग्रेनेट, ओनियन और पूरे देश में। डेयरी इंडस्ट्री में भी हम लीडिंग में काम करते हैं महाराष्ट्र। लेकिन अब ये सब अच्छी जो कंडीशन थी वो अभी अच्छी नहीं रही है, वो डिटोरिएट होती जा रही है सभी इंडस्ट्री की। आज ही विस्मा जो है, जी आई थिंक हाँ आदिनाथ नेटवर्क, हाय हाँ, सर, यस, आप अगर आपका वीडियो ऑफ करके, आपका नेटवर्क जा रहा है तो ऑडियो बीच बीच हाँ, में थोड़ा, तो वीडियो ऑफ ठीक करके बात है, करेंगे, अच्छे से आएगी। मैं जी वीडियो ऑफ करता हूँ। जी जी, कंटिन्यू हाँ कीजिए। हाँ, ऑफ करो। या हाँ, हाँ। वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कल ही एक प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी एमएसपी क्या होती है शुगर केन के लिए, वो मिनिमम सेलिंग प्राइस रहती है शुगर की, वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये एफआरपी भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और एमएसपी भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है शुगर केन की, शुगर की। तो अभी हो रहा है ऐसा कि 3-4 साल से एफआरपी बढ़ रही है, लेकिन एमएसपी वही पे है, 31 रुपीज पर केजी, ऐसी एमएसपी है। और एफआरपी में बढ़ती जा रही है 4 सालों से। तो उनके कहना है कि हम ये एमएसपी बढ़ा के दे दो, ताकि शुगर के प्राइसेस हमें बढ़ाने होंगे। अगर ये नहीं हुआ तो शुगर फैक्ट्री सब खत्म हो जाएंगी इस साल से। तो उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है, अगर आपने नहीं बढ़ाया तो हम शुगर मिल्स इस साल नहीं चलाएंगे, ऐसा कुछ दिया है उन्होंने। तो ये सब अभी चल रहा है। डेयरी का भी आपको सबको पता है, डेयरी में पैसा अच्छा मिलता है फार्मर को, लेकिन उसका खुद का लेबर जो है, जो हातेकर सर ने और दीपा ने भी बोला, और ये सीमा कुलकर्णी मैडम ने भी बोला कि खुद का लेबर की कॉस्ट उसमें नहीं रहती है, लेकिन उसके जो रेट है दूध के, हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम है और उसका रेट भी कम मिलता है। तो ये भी अभी दूध धंधा भी हमारा प्रॉब्लम में आ गया। हालांकि हमारा दूध इंडस्ट्री में हम सबसे आगे है, लेकिन ये हालत अभी महाराष्ट्र की ये हो गई है।
आपको सबको पता है कि महाराष्ट्र के जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो हो गई, जो कुछ भी हो गया अच्छा इसमें, तो यशवंतराव चौहान साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने एग्रो इंडस्ट्री को और कोऑपरेटिव को बढ़ा दिया। उसके बाद वसंतराव नाइक साहब ने ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। उसके बाद शरद पवार साहब ने हॉर्टिकल्चर और कोऑपरेटिव को, ये इसके फल हम आज भी चख रहे हैं, लेकिन अभी ये डिटोरेट होता जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा सुधार आने की आवश्यकता है। दूसरी जो आपने बात की थी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में, तो एक्सपोर्ट बैन ये सबसे बड़ा हथियार गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया है। और आप पर लास्ट 5 सालों से आप देखोगे तो हर एक चीज पे उन्होंने जो जो भी उपज है फार्मर की, उसके हर एक चीज जो इम्पोर्टेंट कमोडिटी है, उसमें आप गेहूं ले लो, चावल ले लो, चीनी ले लो और प्याज ले लो, इसमें सब पे 2-2, 3-3 बार एक्सपोर्ट बैन लगाया गवर्नमेंट ने। और उसका फल भी उनको मिला लास्ट इलेक्शन में। अपने हमने एक स्टडी किया था पूरे कंट्री का, तो ये जो है मैंने बोला वो गेहूं, चावल और चीनी और प्याज और तूर, इसमें जो कुछ एक्सपोर्ट बैन लगाया था इसका हिसाब उनको मिला। तो 76 कैंडिडेट्स उनके इस बेल्ट में जो है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा के, उनके पराभूत हो गए 76 एमपी जो थे। और महाराष्ट्र में तो आपको पता है कि 14 सीट्स उनके हाथ से गई निकल के। तो इसके बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया और ये सब एक्सपोर्ट बैन जो ओनियन पे था वो उन्होंने उठाया। इडिबल ऑयल का जो खुली आयात करते थे उस पे उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई और ये सब बाद में करते गए वो, लेकिन तब तक बहुत नुकसान फार्मर को सहना पड़ा। और आगे जाके अभी कुछ बचा है उसके पास फार्मर के, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी वो सब प्याज ले लो आप या सोयाबीन ले लो लास्ट ईयर का, वो सब आप व्यापारियों के हाथों में है। तो अभी फार्मर को इसका फायदा कुछ नहीं मिलेगा, वो व्यापारियों को फायदा मिल रहा है अभी आप देखोगे तो। यस और आदिनाथ आप जी, मुझे एक सवाल पूछना था। आपके पास बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन है, बट हाँ, सवाल भी आ रहे हैं। तो आप जो ये सभी बातें बता रहे हैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, allied, क्रॉप्स, allied. तो इसमें आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति अच्छी थी और अभी नहीं है, अच्छी थी अभी नहीं है। तो जो आरोप अभी अपोजिशन कर रहे हैं कि महाराष्ट्राचा विकास दुसऱ्या राज्यात नेला जातोय, महाराष्ट्र का डेव्हलपमेंट महाराष्ट्र के पास अभी नहीं रहा है, नंबर 1 नहीं रहा है, हम महाराष्ट्र को नंबर 1 वापस बनाएंगे, ऐसे सत्ताधारी बोल रहे हैं और विरोधक भी बोल रहे हैं आज। तो ये बात सही है क्या? महाराष्ट्र नंबर 1 क्यों नहीं रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैं अभी पूरे रूरल महाराष्ट्र में घूमता हूँ, फार्मर के साथ बातचीत करता हूँ, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी जगह प्रॉब्लम चल रहे हैं। सोयाबीन लो, कॉटन ले लो, शुगर केन का इश्यू चल रहा है, मिल्क का इश्यू चल रहा है। ये सभी अभी महाराष्ट्र नंबर 1 इसी में नहीं रहा। कुछ एक दो चीजों में रहा है, अभी शुगर केन में हम लीडिंग में है, बाकी कुछ चीजों में है, लेकिन बहुत सी चीजों से हम पीछे हट गए। आपने जो बोला कि ये हमारे महाराष्ट्र के सब प्रोजेक्ट बाहर जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा था कि यहाँ के जो स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही थी, आपको पता है रोजगार हमी योजना, मनरेगा, ये महाराष्ट्र में पहले इम्प्लीमेंट हो गई थी शरद पवार साहब के और उन्होंने बाद में ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर दी बाद में जब वो कृषि मंत्री बन गए थे उसके बाद। और फलोत्पादन जो है, हॉर्टिकल्चर, ये भी महाराष्ट्र में पहले स्कीम बनी थी सबकी, सबसे पहली, और उसके बाद वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो गई। इसी तरह के अगर प्रोजेक्ट जाते हैं तो ये अच्छी बात है, ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता है, ये रिप्लिकेशन अच्छा होता है, लेकिन प्रोजेक्ट जा रहे हैं ये तो गलत बात है। और ये एग्रीकल्चर में तो हम लीडिंग नहीं रहे। अभी आप देखोगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब स्टेट है वो आगे जा रहे हैं, हमारे दाक्षिणात्य जो राज्य है वो हमारे हमसे आगे जा रहे हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, उनका एक्सटेंशन सर्विस सबसे अच्छा है। क्योंकि आप महाराष्ट्र में देखोगे सबसे बड़ा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्सटेंशन के लिए काम करने के लिए जो काम करता है, वो सबसे बड़ा हमारे 28,000 की स्ट्रेंथ है, उनकी स्टाफ है उनके पास, लेकिन एक्सटेंशन का कुछ भी काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। बहुत भ्रष्टाचार हो, सभी स्कीम आप देखोगे गवर्नमेंट के, सभी स्कीम में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप क्रॉप इंश्योरेंस ले लो या कौन सी भी स्कीम ले लो, सभी में भ्रष्टाचार होता है, आपको दिखाई देगा। तो ये सभी अभी हालात है महाराष्ट्र के। Yes, the latest CSDS survey, MIT CSDS survey also pointed out that
inflation, unemployment, and corruption are the three biggest issues which voters consider Maharashtra is facing. आदिनाथ जी, मैं लोग सवाल पूछ रहे वो पूछना चाहूंगी, लेकिन एक सवाल था, आपने क्रॉप इंश्योरेंस की बात की, तो क्या आप हमें अहम मुद्दा बता सकते हैं, जैसे कि हम सभी जर्नलिस्ट आने वाले समय में इस पे स्टोरीज करने वाले हैं इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्रॉप इंश्योरेंस और फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी में फार्मर्स आज कौन सी दिक्कतें फेस कर रहे हैं महाराष्ट्र में, या इनको ये सब एकदम सहायता से मिल रहा है? क्रॉप इंश्योरेंस का जो चल रहा है, फर्टिलाइजर सब्सिडी ठीक है, उसमें ज्यादा कोई ये नहीं, थोड़े से रेट बढ़ गए, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी 1 रुपए में आपको क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा, ये स्कीम लॉन्च कर दी गवर्नमेंट ने। ये सभी जगह हो गए, फार्मर ने भी सब ये कर दिया, फॉर्म सब भर दे सभी ने। लेकिन जब नुकसान होता है, अभी इस साल बहुत नुकसान हो गया। लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत बारिश कम हो गई थी, तो उसी हिसाब से नुकसान हो गया। इस साल क्या हो गया कि ज्यादा बारिश हो गई, 117% से ज्यादा बारिश अब आपको देखने को मिलेगी। रिटर्न मानसून और सभी जगह बहुत बड़ी बारिश हो गई, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन अभी सब इलेक्शन में लगे हुए हैं, पंचनामे जो करने चाहिए वो नहीं होते हैं पंचनामे। और जो कंपनी जो है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी, वो भी फार्मर को नहीं ये कर रही है, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है फार्मर को पैसे देने में। तो अभी ये सब चल रहा है, फार्मर डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये दे दो, हमने इंश्योरेंस क्लेम किया है, लेकिन आप उसके साथ नहीं देखते। लेकिन ये अभी होते हुए नहीं दिखाई देता। दूसरा मुद्दा जो आपने बोला इन्फ्लेशन का मैं हातेकर सर से भी पूछना चाहूंगा। मुझे मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन की जो कुछ डेफिनेशन है वो थोड़ी गलत है। अगर फार्मिंग सेक्टर से आप देखोगे तो ये सब बहुत गलत डेफिनेशन है, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि कुछ लोगों को सस्ते में मिलना चाहिए, इसलिए कुछ लोगों के ऊपर आप अन्याय कर रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं। और ये कम लोग नहीं है, अमेरिका में, ये इजराइल में, या और ये प्रोग्रेसिव स्टेट है, वहां पे 3, 4, 5% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अब महाराष्ट्र में 50% से ऊपर लोग इस पे डिपेंड है, उसके रोजी रोटी, उसका पेट उस पे है। लेकिन हम उसके दबा रहे, उस पे बोझ डाल रहे, क्योंकि ग्राहकों को सस्ते में मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का ये है, क्योंकि उसको उनको वोट चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये गलत है, ये डेफिनेशन में हमें कुछ सुधार करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है गरीब लोगों के लिए, तो गवर्नमेंट खुद को जेब से निकाल के दे दो ना उनको, अलग जी, कोई सब्सिडी का पैटर्न बना लो, ऐसा होना चाहिए मेरे yes. हिसाब Adinath ji, let's से। ask Neeraj Hatekar sir on this note only. Neeraj sir, if you could switch on your video, that is like comfortable for me. Sorry to bother Yeah. you, but yes. So that question and another question Jyoti had asked, that weren't there pre-election soaps earlier too? And so transactional politics has always been there. So two questions. One is If first, you could combine both. I will start talking with Adinath's question. I think in a sense he is right, because the way we measure consumption, inflation, for example, consumer price inflation, then that's really based on what is the price paid by the consumer in there. Right, so there is a survey, and then the rural and urban consumers, what are the commodities that they buy, how much they spend on those commodities, and then those things are aggregated into a consumer price index. And the target really for example, for the Reserve Bank is the consumer price index of they have to maintain the inflation at 4%. Now, very often there is a gap between what farmers get and what the consumers actually pay. So inflation can be high for consumers. In fact, it can be much higher than what is recorded in the data, right? Because for instance, if you are a poor person, then you actually pay, or you spend a lot of your money on food, and vegetable prices, for example, last year have increased by 30% from the consumer's point of view. So it hits there badly, but because it doesn't take into that, it does not really reflect the prices which farmers are getting on the ground. There can be a complete disconnect between the two situations, and I very much see this point that if we could have a situation where farm gate prices and what prices consumers pay were the same, then you could probably say that consumer reflects. But those are two different prices completely, and therefore, and yes, there is a larger urban bias in our policy making, that we want to keep urban consumers happy, or we want to consumers happy.
So we don't let prices rise so much, and then therefore we have these kinds of interventions for onions, and that we saw, trying to keep food prices from rising too much. This has not been just this year. This has been a long-term policy thing in the country, and that has been one of the major reasons which has created this upper limit on, created problems for agriculture. Coming So, question, yes, there have been SOPs always, right? There have been SOPs, but then one has to be very careful about how one distinguishes between SOPs, something which is a remedy, and something which is a genuine welfare thing, right? For example, I can think of many things which happened during, say, the UPA regime, one or two, right, which really helped the poor. For example, the MG Narega Act, which has been a critical thing for keeping many people afloat now over the years, right? Or Right to Food Act, right, which said that you can get certain food if you are below poverty line, right? Or we have something with Sanjay Gandhi Niradhar Yojana. Somebody was asking about this, right? Okay, so Sanjay Gandhi Niradhar Yojana is something which gives some financial support, very minimum financial support to families whose annual income is less than 21,000 rupees. So those are ones which we should do, right? But increasingly, what we have seen, there is a structural change, especially in the last 4 or 5 years, where there has been a greater attempt to directly get into a transactional relationship of wooing, uh, you know, uh, wooing voters. For example, I have never heard in the past a chief minister say की लाडक्या बहिणींनी आम्हाला सामर्थ्य दिलं तर आम्ही हे 2,500 पण करू किंवा 3,000 पण करू. This kind of a direct, transactional relationship, right? Politicians always done it at their own level, like distributing sarees, distributing alcohol, distributing money. But state as a whole of buying consent, virtually buying consent, right? I think this, at least to me, it seems much more starker now. And the scale of the expenditure is huge. So we're talking about 1 lakh crores almost yeah. this year. I think with this answer, you have also answered Deepa's question where she was asking what is the difference between Yeah. Sanjay Gandhi Niradhar Yojana That's right. and Ladki Bahin, right? Yeah, but I can elaborate a little bit on it, Yeah. because Sanjay Gandhi Niradhar Yojana is a very minimal scheme. If you are a disabled person, or if you are a, ekal mahila, or and if your annual income is less than rupees 21,000, and if there are more than one member in your family, then you get 900 rupees per month till one of the people in your family crosses 25 years of age. So so it's a very, very minimal kind of a thing. Whereas Ladki Bahin is directly 1,500 rupees per month to anybody who applies on that app, right? And they're not necessarily, so that limit is 2.5 lakhs, but many people have crossed that limit. I think the kind of checks and balances on that are very poor. And that is an unconditional transfer, really, for women. Yeah. Seema, if I could ask you couple of questions. First is Janvi Mule has asked, we are talking about Maharashtra losing number one in rural and agriculture sector. How much of it is related to changing weather patterns? Do you see climate change on agenda of any discussions during this election? Because you're also part of SOPECOM, which is conducting many surveys and research in this area. I would like to request you to take these questions. Also, Prachi has asked another question about as elections approach, will there be 2 or 3 main muddas for rural women? Yeah, thanks for the question. I think climate change very much should be on the agenda. And unfortunately, it is not the way we would like to see climate change. But I think, and climate change manifests itself in multiple ways, as we know, heat waves, sudden events of rainfall, of floods, droughts, multiple things that we are already witnessing, which directly impact both yields. So there are crop yields which are affected, but we also see a huge impact on health of people. And we have actually documented detailed impacts on both women's health and its direct relationship to actually
a decline in employment also, employment opportunities for agriculture as well. So I think there are multiple factors here. So it is not just about how weather changes and how that impacts your water tables and your crop yields, but I think it has very long-standing impacts on health and economic security of people as well. But I just wanted to elaborate this a little more here, because I think climate change is, as we all know, I mean, it's a cumulative, what we see as a process today. But I think it has a lot to do with how we have, introduced policies in agriculture, in our overall natural resources environment. I think that also has contributed significantly to what we are seeing in terms of what has failed in Maharashtra. So, for example, this excessive dependence on certain crops. I think monocropping and the entire way we are doing farming, and this is not just Maharashtra, largely across the country, but in Maharashtra today, we only see 3 or 4 major crops, and we know the whole cotton story is directly linked with farm suicides. It's no longer limited to cotton. We already see shifts in Marathwada, which is a soybean growing area as well. And it is not very far when we will see farmer suicides in Western Maharashtra and Northern Maharashtra also. We're already hearing stories from there. So I think the way agriculture, the kind of agriculture that has been promoted also has a lot to tell us in terms of why we are seeing these changes. So monocropping, excessive use of chemicals, weedicides, herbicides, mechanization of a different kind is also leading to depletion of soil fertility. I think as Adinath ji already said, only despite being the largest uh, you know, uh, uh, investor in its irrigation projects, Maharashtra has only 20% of its cropped area irrigated. And this is largely in the sugarcane belt. So we are seeing a very different impact in this Western Maharashtra region also, with waterlogged soils, saline soils, which also are already impacting the sugarcane yields. So climate change is about all of this also. What has been our policy direction in agriculture? And do we really want to go there? Or are we going to start talking about bringing in diversity on our farms and ensuring that the government supports that diversity? Today, unfortunately, we have an FRP for sugarcane or soybean and cotton are the protected crops. And even then, we are seeing that, farmers are not getting the due. Already, Adinath mentioned how cotton and soybean are below the MSP. That is what they are actually managing to get. So here, if we bring in incentives to grow your crops, your jawar, your bajra is completely lost, or your millets, different kinds of millets, ragi. So why are we not promoting this diversity, which will bring back not only soil health, but also I think what we are talking about, our own health, and also looking at diversity in terms of the entire ecosystem. So I think agriculture will have to be reimagined if we want to also bring in women and other vulnerable sections to the center. We're seeing declining employment in agriculture. That's what's reported by women because of herbicides, weedicides, mechanization. But I would like to highlight the paradox here, because on the one hand, we're seeing official data which says that women are there in agriculture, unemployment has gone down. But what we are seeing through our studies is really concentration of work in particular seasons. So what you have is labor shortages for the farmer or the cultivator in a particular season, but you have no work for a large section of the agricultural laborers in the rest of the year, because we are going for monocropping. So there's no diversity on the farm. So all your season is in that short window where you have to harvest or sow only 2 or 3 crops. So I think we have to look at a broader
structural change in agriculture and the way we imagine agriculture. I Yeah. think we have to move away from the green revolution model, and therefore our plea in the women-led agrarian narrative will always be that reimagine agriculture. We have to look at decentralized markets, decentralized PDS, because it's right. We cannot be, the farmers cannot be supporting a large section of the urban middle class at the cost of their own farm produce. But why can't we think of a different kind of decentralized systems? And I would like to highlight that PDS, public distribution system, has been a savior for women. All our studies have shown that if PDS was not there, there would be not just malnourishment, but also hunger. And I think we cannot do away with these public systems. We need to strengthen them, but we will have to find ways of doing it without really, affecting the farmers' right to actually also get a very reasonable income. The C2 plus, what is Swaminathan Commission has already proposed, that it has to be a comprehensive MSP. It cannot just be A2 and the limited measures that the state is trying to introduce. Yes. But it also cannot be at the cost of the poor. Because I think public systems, whether it's Manrega, the Food Security Act, which has, brought in the diversity that we're looking for, definitely need to be recognized. And from the women's perspective in rural Maharashtra, I think, we are looking for an agriculture policy for women farmers, which will bring in this kind of a direction. And as I said, there are these invisible workers, women workers. What are their issues? We don't have a nuanced reporting of that at all. There are very broad brushed kind of analysis that we see for women farmers in the larger definition. I'm not talking only about landowners and cultivators, but livestock workers, fisheries. There is a livestock survey that the government of India is undertaking now. So what is happening to those pastoral communities where women are at the forefront? I think all of these are issues that we need to start reporting in a nuanced way. So recognition, registration, entitlements are three key words for us at MAKAAM. But all of this needs to be seen in the larger crisis of agriculture. It cannot just be, add women and stir that humko ye bhi de do, wo bhi de do, because then we make ourselves more as supplicants. But we are really trying to look at a reformed sector, which will, with dignity, give women farmers their due rights. Yes. So that is what I would say is the way forward. Really. Yes. Yes, Adinath ji. Seema, meanwhile, if you could just read question asked by, I think, Nirupama and quickly answer it as we are going to sum up this session very quickly. Yeah. Yes, Adinath ji. यस यस मेरी एक रिक्वेस्ट थी, सब जर्नलिस्ट अभी यहाँ पे है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो रहता है वो क्या होता है कि हम ग्राहक के बारे में, कंज्यूमर के बारे में ज़्यादा लिखते हैं, उसके सपोर्ट में स्टैंड लेते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है। गवर्नमेंट का क्या होता है कि प्रो इंडस्ट्री, प्रो कॉमर्स, प्रो कंज्यूमर ऐसी स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की रहती है और मीडिया भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो मेरा ये कहना है कि हम ये एग्रोन जो है, हमने 15-20 साल पहले ही शुरू हुआ महाराष्ट्र में, एग्रीकल्चर के बारे में डेली है और वर्ल्ड का एक पहला एकमात्र डेली है कि जो एग्रीकल्चर के बारे में सिर्फ लिखता है। तो हमने जब ये शुरू कर दिया था, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन था कि हम कैसे लिखेंगे फार्मर के बारे में। तो हमें एक अलग सी टर्मिनोलॉजी सेट करनी पड़ी, क्योंकि अब क्या होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया में महंगाई बढ़ गई, प्याज ने आंखों से पानी निकाला, चीनी कड़वी हो गई, ये जो वर्डिंग होते हैं ना, वो बहुत दुखदायक है फार्मर के लिए, क्योंकि फार्मर के बारे में ऐसा कोई नहीं लिखता है जब उसके भाव गिरते हैं। तो मुझे ये अपील करना है सबसे कि आप ये भी एंगल थोड़ा सा आपको ध्यान में लेना चाहिए। हम क्या करते कि प्याज के भाव बढ़ गए, चीनी के भाव बढ़ गए, ऐसा हम लिखते हैं। तो टर्मिनोलॉजी भी मैटर करती है कि हम किस तरह से लोगों के सामने हम ये सब्जेक्ट प्रेजेंट करते हैं। Of course, तो and मेरा after थोड़ा all, सा ये yeah, अपील yeah, था we सबसे are कि in the business of communication, very serious, no nonsense business. So हाँ, we must work on our vocabulary very carefully. Thank you very much, Adinath ji. क्योंकि और 50%
पॉपुलेशन है ना, 50% है population. yes, I understand. Yeah, thank you. आदिनाथ जी, मुझे सीमा और दीपा के और नीरज सर को एक लास्ट सवाल और उनकी कमेंट लेनी है, बट उससे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे दीपा ने पूछा है, महानंद जैसा एक गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव मिल्क का ब्रांड, एक डेयरी का ब्रांड बंद करने की कोशिशें हमने देखी है, तो ये सब का डेयरी इंडस्ट्री पे और वेस्टर्न महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा, इसका आप कैसे देखते हैं इसको? महानंद का आप सबको पता है, महानंद क्यों शुरू हो गया। महानंद की कंसेप्ट ये थी, जैसे अमूल है, गुजरात में बहुत सारे कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट में है, तालुका लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पे है, और उसका पूरा अपेक्स बॉडी अमूल है उसकी। तो महाराष्ट्र में ये कंसेप्ट थी कि महानंद ऐसा होना चाहिए। तो कोऑपरेटिव सभी डिस्ट्रिक्ट जो संघ है, जो कि यूनियन है, वो सब महानंद को सपोर्ट करें, और महानंद के ब्रांड के हिसाब से सबको ये पूरे कंट्री में हम हमारा मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट थी, लेकिन पॉलिटिशियंस ने ये सब बिगाड़ दिया। उनको खुद को उनका ब्रांड चाहिए था, किसी के अंडर उनको काम नहीं करना था, क्योंकि उनको करप्शन भी करना होगा शायद वहां पे। तो इसी हिसाब से महानंद को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो ये अभी ये बंद हो गया और ये एनडीडीबी को हस्तांतरित कर दिया। इसका सबसे पीछे रीजन ये, अगर ये होता तो अमूल से हम लड़ते। अभी भी बहुत अच्छे संघ है हमारे पास, गोकुल जैसा संघ है कोल्हापुर का, तो 18 लाख लीटर डेली कलेक्शन है उसका, बहुत बड़ा, अच्छी तरह से काम कर रहे हो। चित्रे है, वारणा है, कि राजों से, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव है, ये अच्छी तरह से काम कर रहे। लेकिन अगर महानंद होता तो अमूल के साथ हमारी टफ फाइट हम दे सकते थे। Priyanka Tupe has asked another question, that there are multiple issues DBT schemes are facing. I mean, the beneficiaries or probable beneficiaries of DBT schemes are facing. KYC उनके करने में बहुत दिक्कतें आ रही है, तो आदिनाथ जी या सीमा, आप अगर कोई बता सकते हैं कि इसके लिए आगे जाके, या नीरज सर, यू कैन ऑल्सो टेक दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स वी कैन टेक फॉर implementation of DBT schemes? Can I give some instance of what really happens when DBTs are there? Yes, but we have to conclude this by 6:30. So all of you, one comment I'm going to ask. So please stick to the time. So yeah, thank you. DBT can be extremely problematic. For example, when they linked Narega cards, job cards, and bank accounts, 2.5 crore Narega cards got invalidated, and they were almost 70% of them were genuine workers. And that is because KYC and all those things don't happen. So I think we should be careful to kind of deliver everything through KYC, through DBT. The largest structural things in the economy, right? Creating better employment opportunities, creating better public health systems, creating better education systems, that should not be given up, because currently what's happening is DBT is becoming a substitute. And the related problem to this is that it has to do with the larger state capacity. I think we now, Maharashtra, the major problem that we are seeing is the capacity of the state to deliver these things has weakened extremely, because on the one hand, politicians are the only managers. They don't come grassroots level. They have to manage their own constituencies, their own supporters, and that is what is key to being. And therefore, that whole structure of politicians, bureaucrats, last mile planning, delivery, right, that is not happening in Maharashtra. And that is, I think, the critical part on this. Second quick comment I would like to make is, when we think of structural transformation, problems in agriculture, for example, right, then as a social scientist, I always look at it, problems for who are the people who are affected, what are the caste locations, what are the gender locations. So the same solution doesn't work for everybody. For example, a lot of people are advocating that farmers should shift to high value crops, dairy crops, poultry, contract farming, right? Ashok Gulati and others are saying that because crop returns are not good. But for example, when that happens, think of a woman who's being able to sell some chicken in her backyard. The moment that becomes a poultry, she loses control. So it's a larger process of it's a larger agenda of structural, cultural, political, and social transformations. And therefore, just looking at it from a purely technical, economic, market government point of view it doesn't really solve the problem. Yes. Deepa said that she wanted to answer Nirupama's question quickly. Deepa, if you can come in. Although Seema has answered it in detail, but I wanted to hear from Deepa.
think we have lost Deepa here. आदिनाथ जी, मीनवाइल अगर आप जो हाँ। करप्शन की बात बार बार आपके सभी आंसर्स में आ रही है, और ये गवर्नमेंट तो बोल रहा है झोली उठा के चलने वाले, हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोगों को दे रहे हैं, नाथ भाऊ काय नावं आपण ऐकतोय सगळी. सो ये करप्शन अभी बढ़ा है, ये पहले से था, अभी हम बात कर रहे हैं क्या हुआ है? ज्योति जी ने 2-3 बार ये आपको पूछा है कि कितना बड़ा है गवर्नमेंट में करप्शन. पहले से करप्शन था, लेकिन अब एक्सट्रीम लेवल पे गया है अभी। अभी आपने मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि ये प्रूफ्स इतने अपने हाथ में नहीं रहते। लेकिन आपने हाल ही देखा होगा, तो 3 सेक्रेटरी जो है महाराष्ट्र के, 1 साल में 3 सेक्रेटरी चेंज हो गए। एक तो सेक्रेटरी 1 महीने में ही गई, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव था इल्लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया, तो उसको भी बदल दे दिया। तो इस तरह का सब चल रहा है। और ये डीबीटी की, अब नीरज हाथेकर सर ने भी बताया, डीबीटी का जो करप्शन चल रहा है वो क्या होता है कि अगर मैंने कुछ स्कीम ली है, मेरे पास कुछ आने वाला है, डायरेक्ट बेनिफिट आने वाला है गवर्नमेंट के पास से, तो होता है ऐसा कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके अधिकारी जो होता है उसके हाथ में रहता है डीबीटी के पैसे रिलीज करने का। तो वो क्या करता है, अगर उसके पास लिस्ट रहती है, तो वो फार्मर से पहले कनेक्ट होते हैं कि भैया आपके ये पैसे आने वाले, मुझे पहले दे दो। तो पहले उससे पैसे निकाल लेते हैं, बाद में डीबीटी के पैसे रिलीज होते हैं। ये भी जो हो रहा है अभी। बहुत तो ये प्रॉब्लम जितनी है. टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं ना, उसको हम पराभूत भी कर रहे हैं। ऐसा ऐसा हो रहा है सर। जी जी. Yeah. Seema, one last comment from you. You had mentioned land reform is at the center of agriculture and rural Maharashtra's reform, if we have to talk about it. Is it possible to make those reforms in today's time? I mean, looking at all the political situation and the kind of fragmentation we have in Maharashtra today. Um, I think it is a challenge that has to be taken up because Okay. this is, I mean, it's an unfinished agenda in a way, and we are looking at so what way can it be taken up? Are we looking at privatization of commons? The answer is no. But can we look at alternative ways in which this kind of land reform agenda could be taken up, especially for it's very interesting to also see ki the percent of landless in Maharashtra. I think although all our official data is showing a very different picture, but if you look at even some of the micro studies, and a more recent study of ours actually showed a very high percent, more than 50% landlessness in 3 districts that we studied. In this kind of a scenario, this uneven, the economic inequalities in terms of income we discuss, but these kind of inequalities in terms of asset ownership, and where land is very central to a population of 50%, which is dependent on agriculture. I think we will have to take it up as an agenda for Maharashtra. Definitely the unfinished agenda will have to be taken forward, but I specifically would argue for the unfinished agenda in terms of whatever has been stated in law and in certain policies for women. For example, the Forest Rights Act. The law says that it has to be joint ownership in independent the IFR, but yet we do not see that in practice. So why is that not happening? And I think this is a completely unforgivable kind of a thing, and we definitely have to take that forward. For Gairan lands, there has been a huge movement in Maharashtra where occupied Gairan lands need to be regularized, and these regularized lands need to be in joint names. Wherever there is a single woman, it has to be in her name. This is an unfinished agenda, and unfortunately, despite Maharashtra bringing in the Hindu Succession Amendment in 1994, a decade before the central government did, we do not see any substantial gains in that direction. Whatever property ownership we see, claims are from the widows Yeah. and not from the daughters. So I Yes. think there are a number of issues that need to be taken forward Yes. in terms of land rights for Yes. women. There are many questions still coming in. Seema, if you can take, I think, Geeta's last question. I am sorry, due to a time constraint, I cannot take it. Meanwhile, Neeraj sir,
quickly to wind up this amazing discussion and insightful discussion, if you could tell us that we are saying that Maharashtra is not number one, we need reform, financial condition we have been discussing. What needs to be done and what should be expected from the upcoming government for the betterment of rural Maharashtra? Should I start? Seema, Yes, I want yeah. to take the Quickly. question. Sir, if you can answer that in 2 minutes, and that would be last comment of the session. Okay. So basically, you know, what needs to be done is a much larger. So you need to, for example, look at issues like millets. You need to get better remunerative prices. You need to improve women's control over markets, right? Whatever change you do, you have to make sure that that's not a disenfranchising, disempowering. We need much greater investment in health, education, public goods, and not really these direct benefit transfers. They should go only to very, very needy people, but for the general people, it should be the larger improvements in public goods. But at the same time, because as I said, economic transformation doesn't happen in isolation. It's also at the same time a process of social transformation, cultural, political issues also. And the current problem is really, really, if you look at it, then it's a patriarchal caste kind of a control over the larger economic systems. And therefore, it's a collective struggle which all of us will have to put in as an agenda in an integrated fashion. Probably that will help us somewhat. Yes. With that comment, I say thank you very much to all the panelists, Neeraj sir, Seema madam, Adinath sir, if you're there, yes. And Deepa was with us at the beginning of this session. Thank you all attendees for your patience, and I would thank all panelists also for their patience. I assume that all of you would be available for any assistance, help, or guidance if any of the NWA member wants to reach out to you. Right. Yes. Yes. With that Thank you. notice, I'll sum up this session and we'll share the panelists' contact details with you. I'm so sorry if I could not take some of the questions. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. Yeah. Thank you, Bye-bye. Adinath.